Let me know if the audio is coming. Let me just check from my phone. Hello. The audio seems to be fine, right? Okay. Hello. Yeah. Okay. So today's live stream will be a quick one, and I think I'll make a video as well separately because in a live stream there's a lot of me looking at the comment section and doing a lot of scrolling and stuff. I'll try to make a separate video on this with good editing and stuff. But the point of today's live stream is that I discovered some crazy things in her budget because I was trying to find out why exactly can't she pay the dearness allowance, the DA, to government employees. So as you all know, if you all probably don't know, there's not much coverage about this issue in the national news media. That is, we have huge numbers of scam. Each and every day, 1 to 2 Trinamool big shots get arrested because of scams, whether it's smuggling cows to Bangladesh or mining coal illegally or mining sand illegally or giving away government jobs, teaching jobs to every level of government jobs. Okay. Even hilariously low government jobs also have been sold off to people who are willing to pay enough price to Trinamool big shots, which is what happens in a welfare society, which is how every communist and socialist dictatorship and governments fail, which is how Soviet Union fell, which is why Cuba, Venezuela, etc. These things don't work, because when you create a welfare dependent society where you pretend to give away everything for free out of the benevolence of your heart, what you end up creating is a big filtering and spillage, a leakage system called the bureaucracy. Who will be the people who will deliver your free goods to the ground level? And for them, you have to, and for that bureaucracy to exist, you have to pay them salaries. And then there's a huge bribery issue as well, because you have to beg in the party office and stuff. That happens in every socialist society. But just like you can argue that Cholas were not Hindus, but they were Hindus because they may not have called themselves Hindus, but they did everything Hindu thing because the Hindu word was not popular. In the same way, Mamata Banerjee and the Trinamool Congress has always been in a competition to be how socialist or communist they can be. Okay, and they won that fight in 2011. They defeated the leftist party because they were for the left of the CPIM. Today, half of leftists vote for Trinamool, half of to prevent fascism, and half of leftists still vote for CPIM. And there is the huge Trinamool Congress supporter base who are socialists and communists at heart if you ask them on any policy matters, but they don't know that it's called communism and socialism because they are uneducated. And then we have Nobel laureates like Abhijit Banerjee and Amartya Sen who also believe in these kinds of economic policies, development economics, welfare, empowerment, everything Rahul Gandhi, that word jumble and the salad that Rahul Gandhi does. You know, his famous clip that went viral with Arnab Goswami years back when he was saying the word empowerment every 2 minutes, empowerment of the empowerment, by the empowerment, empowerment for the empowerment, etc. Today what we will see in the West Bengal budget of 2023 is something like that. But that's not what I started researching today. I was researching why is she sounding defeated. Let me show you as a bit of background if it's necessary. You all know Mamata Banerjee is a fierce leader. If not anything else, she may be uneducated on economics, she may be weak on terrorism and crime, etc. But she is a fierce leader in whatever thing she believes in. If she believes in something, whatever she thinks is wrong or right, she fights for that very brutally and with all her grit and might, etc. Okay. So such a leader saying defeatist things is very unheard of in West Bengal. Now here are some of her quotes, okay? These are 4 quotes. 4 quotes on 4 separate occasions in 4 different contexts. Let me translate for you what she has said. First is that she has said that DA dite parbo na mundu kete nin. You may chop off my head, but I won't be able to give DA to government employees. This is what she said. Another thing she has said is, I won't go into an alliance with Congress party in 2024. Third, she has said, if I have done some mistake, you can slap me. Mamata Banerjee is saying this because she is so fed up of everyday Trinamool Congress party workers getting arrested by ED or CBI. And fourth, this she said in the last elections actually because she was beginning to seem like she's losing control of her party because every party worker seems to be a criminal. It was seeming like that already in 2020-21. Everyone has known this since 2011, 2016, everything. A lot of Trinamool Congress supporters even didn't get a lot of jobs because they were not ready to cough up that price.
Okay, so I give you 4 quotes. Okay, in the 4th quote, she says, she had said this in 2021, that it does not matter who the candidate is in your local election. Okay, whether the councillor or MLA elections, I am the candidate in every seat. Okay, so now let me give you some data about what this fuzz about DA is, and then we will get to her $625 million minority affairs budget and how that's relevant. So I made some notes in my diary because I had to do a lot of math today. So this is the chronology of matters. In 2022 May, after a series of years and years of protests by government employees on the streets, half of them are protesting for 5 to 6 years because they are not getting the jobs as a government teacher, okay, in government schools, and the other half is protesting to get the DA on par with the central government scheme of DA, which is from this year is about 42%. The central government, the fascist Hindutvadi end of democracy, in Bengali they say Phashibad. I'll try to do this video in Bengali as well. So that fascist government is giving 42% DA. The central government, that fascist dictatorship government, was giving 38% DA in 2021. Mamata Banerjee, after a lot of coaxing, decided to give 3% DA in 2021, which increased to 6% this year. Now, the Calcutta High Court told her that you have to give DA. You can't get away with it. So they challenged that decision in the Supreme Court. In the Supreme Court, they have made the case that, first of all, DA increases inflation. That's why we are not going to pay DA. And you all know that I'm a free market economics guy. I think any welfare scheme is bad. But today we will get into specifically some welfare schemes which probably a lot of sane and uncrazy socialists will also think that no, it's a waste. But she made the case that we can't pay DA because it causes inflation. Fair enough. Another thing she said is, if we end up giving, because the Calcutta High Court recommended that the Trinamool Congress government give 31% DA to her government employees. Okay, she said we can't give that because it will cost us 41,770 crore rupees. Okay, now the fun part about this is that this does not cost 41,770 crore rupees this year in 2023, nor in 2022. It costs this much because she delayed it for 3 years. This is an accumulation of all the due DA that she was asked to give, or she was supposed to give morally, because the central government is giving 38%, 35%, 31%, now 42%. She was giving 0% and then 3% in 2021. Which is why all the due DA that she was asked to give now has come up to 41,770 crore rupees. Okay. What does that come up to about per year? It's about 13,000. What I can't read my own handwriting. I think it's 223 or 923, something like that. 13,923 or 223 crore rupees per year. She could not give that. She did not give that. And so now she's stuck with the due amount of 41,770 crore rupees. And today was another hearing, but it got delayed. Okay. Now let me tell you what she does have money for. Again, I'm making the disclaimer. I think all welfare policies are crap and they are wrong and they are useless. The market can take care of every of her policies that she thinks she's going to do better. The market can take care of it better. Because the only way a socialist government and a welfare government works is if a person with purest of intentions and with no corruption in their hearts comes to power. I would say Yogi Adityanath is such a person. Sue me for it. But anyway, if you don't want to trust in all your heart and with all your money, if you don't want to trust the bureaucracy and the government, then you should trust the capitalist more, because they have an incentive to not fail and to not waste people's money, because they will go out of business. The government never goes out of business unless it becomes Sri Lanka or Pakistan. Okay, let's check out what she does have money for. First, this is my collection of some of the policies which might be called a wasteful policy even by socialists. Something called Lokhir Bhandar. Lokhir Bhandar is a money scheme which she gives to housewives who are unemployed for absolutely no reason. Just the fact that they are an unemployed housewife. Okay? The budget for that is 12,900 crore rupees. Okay.
Guess how much that is? 1,560,127,290 12,900 crore rupees is her budget for Lokhir Bhandar. And what is my claim to say that this is a wasteful policy? I'm not saying this because I'm a Thomas Sowell fan. I'm not saying this because I'm a free market guy. I'm saying this because guess how much that housewife ends up getting for free for no apparent reason? If she's from general category, if she's a Brahmin, Kayastha, Kshatriya or Vaishya, that is, she gets 500 rupees in the month. If she's SC, ST, etc., then she gets 1000 rupees in the month. So you see, this does not amount to anything at all. That woman who is getting 500 rupees in the month or the woman who is getting 1000 rupees in the month can do absolutely nothing in return for that 1000 rupees or 500 rupees. Forget wealth creation. Wealth creation पूरे स्टेट में नहीं हो रहा है. Wealth creation इस हाउसवाइफ से तो नहीं होगा. और ये 500 रुपीज 1000 रुपीज से कुछ भी नहीं होगा. कुछ भी नहीं होगा. But she gives this. So, but all that adds up to 12,900 crore rupees. So you could very well argue that 12,900 crore rupees is being sent down the drain. Absolutely. Now, on top of this, this is just the budget for giving away this stuff. This is not counting the fact that they have to basically stand in lines in front of Trinamool party offices and have a great relationship with them, etc. Now, in some places, there might be some good Trinamool people who might say that, no, you deserve this money, so we will give it to you. You have paid your taxes, so you'll get this money anyway. Some places, it's not going to be the case because that's the nature of human characteristics, human traits, that they will try to be as corrupt as possible and they will make people beg for it in the party offices, and then they will get the 500 rupees or 1500, 1000 rupees, whatever. So the extra bribe, etc., is not counted here. It's excluding that 12,900 crore rupees down the drain for nothing. Another such scheme is called Ruposhri Prokalpo. Ruposhri Prokalpo is a policy for getting helping out a family one time with 25,000 rupees if they are having trouble in marrying their daughter off. Okay, this is what that money is for. If you are too poor to marry your daughter, you get 25,000 rupees from the state government, for which you are paying a lot of tax, which is causing you to be poor in the first place, and then you get 25,000 rupees to marry off your daughter. That budget is 1500 crore rupees. Okay. Next, local clubs who organize Durga Pujas, they get 258 crore rupees. They get something to that amount every year. Last year, they got 258 crore rupees. She distributed this amount among clubs who are favorable to her. Clubs who do some work, clubs who are filled with members who help Trinamool Congress come to power in the booth level, councillor level, MLA level, MP level, everywhere. That budget is 258 crore rupees. Okay. Now you could say, wow, this is such a nice pro-Hindu thing. But well, never did in the history of West Bengal anyone require her to do this, because that's where actually the private sector and local crowdfunding takes place. Everyone gets the money to do a puja anyway. Now we are ending up paying taxes, even though the state has no wealth creation. But she is using our taxes to give those clubs the money. Clubs who are friendly towards her vision of the state, she is giving them, those clubs, 258 crore rupees. Okay. Now, the West Bengal government's total minority affairs and madrasa education budget, that is 5,168 crore 99 lakh 46,000 rupees, which is $624,862,741. Okay. Guess how much is the central government's budget for this same thing, at least in this year? Modi government's budget is 3,097,060 lakh crores. Okay, 3,097 crores 60 lakh rupees. That's the budget. Her budget for minority affairs is 2,000 crore more than the central government's budget, even though West Bengal is much poorer and her dues, the state's dues, are much higher. Okay, 2,000 crores more than the central government. On a side note, just to digress a little,
Now do the math that if just West Bengal has this much budget allocation for minority affairs, and the central government, the Modi government, has budget allocation for minority affairs this much. Imagine the minority affairs budgets of all the states, BJP run or Congress run or non or other government run. So imagine the amount we are spending on minority affairs and madrasas. Okay, remember the next time when I say that we need to defund sociology. This is why sociologists are creating these discourses which are creating these policies. Okay, and these are the sociologists who do their PhDs in USA, and they want USA to have these exact same policies, which is why I say that woke politics was born in West Bengal and they are exporting it to USA, which is why USA is going to the dogs. Hopefully they will take down USA with them, but I just hope they don't return to India. Okay, now let me show you what are the absolute crazy things inside the budget. Okay, Gautam, what is the GSDP growth of West Bengal this year? It's about 8%. Okay, now let me cast to you the exact breakdowns of these budget allocations. Okay, because if someone is watching, if a leftist is watching this live stream today, they can argue that, okay, it's a minority affairs budget. Why are you making it sound like it's just for our Middle Eastern colonizer brothers, settler colonizer brothers? Because Buddhists are minorities, Jains are minorities. But that department, that budget department, that budget allocation is called, you will see when I cast it in my window here, it's called Minority Affairs and Madrasa Education budget. Okay, Jains don't go to madrasas, Buddhists don't go to madrasas. There's no Sangha budget here. There's no Jain education budget. Jains paid so much taxes. With their taxes, this half the state runs anyway. Okay, first let me show you this particular thing. Okay, this is West Bengal government's website, and there we see this. You see this thing called 38 in demands. This is what we are going to discuss today: minority affairs and madrasa education. In this, you will find a lot of people have been bungled up, SC, ST, all minorities, etc. But when we go into the meat of the matter, when we go into the details, you will realize that all of this budget basically goes to our Middle Eastern colonizer friends, and mainly madrasa education. But we will get to how crazy those allocations are, because what I realized is there are different, this ministry is minority affairs ministry in West Bengal, but the budget allocation happens for one particular cause from different bureaucracies. All of them try to fund the same things over and over again, and even often with the same exact wording of the cause for what they are setting apart the budget for. Okay, check this out. First let me give you all the headings and the total budgets that you'll see, which I have added up to that 5,168 crores, etc. First is this page: revenue expenditure, minority affairs and madrasa education department. First we get into general services, uske andar administrative services, head of account कौन है? Secretariat. उसके अंदर general services का. Okay, they are handling this sum of 1 crore 17,56,000 rupees. Okay, next, this is similar name, similar words: minority affairs and madrasa education department, social services, education, sports, art and culture. इसका बजट है 5 करोड़ रुपए. हेड ऑफ अकाउंट कौन है? स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विसेज. सर्विसेज, राइट्स, वेलफेयर. थॉमस सोवेल अगर ये बजट देखता तो आत्महत्या कर लेता. ओके, नेक्स्ट, minority affairs and madrasa education department, welfare of scheduled caste, scheduled tribes, other backward classes, ये सब नाम पे है, ठीक है. हेड ऑफ अकाउंट कौन है? welfare of scheduled caste, scheduled tribes, other backward classes and minorities. उसके पहले minorities word नहीं यूज किया था, यहाँ पे minorities डाल दिया है. And then when we get into the detail of this particular page, we will see how much of there is for scheduled caste, scheduled tribes. Okay, you will realize that on your own. We'll just get through it. Okay, another one. Oh, did you see the budget of that? I forgot. Yeah, check out the budget. 2,332,000 crore 24 lakh 46,000 rupees. Okay, now
माइनॉरिटी अफेयर्स एंड मद्रासा एजुकेशन डिपार्टमेंट, सोशल सर्विसेज, सोशल वेलफेयर एंड न्यूट्रिशन. हेड ऑफ अकाउंट कौन है? सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर. ओके, इसका बजट है 5 करोड़ रुपए. इसका बजट 5 करोड़ रुपए नहीं है, इसका बजट है 767 crores 75 lakhs 5,000 rupees. Now we get into Minority Affairs and Madrasa Education Department, Social Services, Others. Others के नाम पे कुछ चीजें होगा यहाँ पे. Other Social Services, Others के अंडर है 149 crore 12 lakh 5,000 rupees. ओके, नेक्स्ट. खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है. माइनॉरिटी अफेयर्स एंड मद्रासा एजुकेशन डिपार्टमेंट, सोशल सर्विसेज, अदर्स. अब इसका हेड ऑफ अकाउंट कौन है? सेक्रेटेरिएट. उसके अंदर सोशल सर्विसेज फिर से 6 crore 53 lakh 34,000 rupees. ओके, नाउ माइनॉरिटी अफेयर्स एंड मद्रासा एजुकेशन डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट, अदर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का हेड ऑफ अकाउंट है. उसके अंदर बजट है 105 crore rupees. ओके, नाउ माइनॉरिटी अफेयर्स एंड मद्रासा एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसका डिपार्टमेंट है कैपिटल अकाउंट ऑफ सोशल सर्विसेज. उसके अंदर कैटेगरी है कैपिटल अकाउंट ऑफ वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस. यहाँ तक कोई माइनॉरिटीज का मेंशन नहीं हुआ. ओके, बट इट्स अंडर माइनॉरिटी अफेयर्स एंड मद्रासा एजुकेशन डिपार्टमेंट, बट कैटेगरी का नाम पे शेड्यूल्ड कास्ट, ट्राइब वगैरह घुसा दिया है. अब हेड ऑफ अकाउंट कौन है? कैपिटल आउटले ऑन वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड माइनॉरिटीज. अचानक से हेड ऑफ अकाउंट में माइनॉरिटीज का नाम आ रहा है, ठीक है, बार बार. इनका बजट है 1,527 crores 17 lakh rupees. नाउ माइनॉरिटी अफेयर्स एंड मद्रासा एजुकेशन, कैपिटल अकाउंट ऑफ सोशल सर्विसेज. काम क्या है? कैपिटल अकाउंट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड न्यूट्रिशन. हेड ऑफ अकाउंट कौन है? कैपिटल आउटले ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर. नाम सुन के लग रहा है कि हाँ, बड़ा तो अच्छा ही स्कीम होगा इफ यू आर अ सोशलिस्ट माइंडेड पर्सन, बट रिमेंबर इट्स अंडर द माइनॉरिटी अफेयर्स एंड मद्रासा एजुकेशन डिपार्टमेंट. बट इफ यू utter a single word about anything pro-Hindu remotely, it's going to be called that unsecular thing, okay? And because we are a secular state, so we can't do this and that, blah blah blah. Here we have 60 crores. Next, इनका allocation है 68 crore rupees. काम क्या है? कैपिटल अकाउंट ऑफ सोशल सर्विसेज, कैपिटल अकाउंट ऑफ अदर सोशल सर्विसेज. हेड ऑफ अकाउंट कौन है? कैपिटल आउटले ऑन अदर सोशल सर्विसेज. it's deliberately written this way. It took me huge amount of brain power to unearth this, okay? It's deliberately written confusingly so that you don't unearth के exactly कितना allocation हुआ है minority affairs में. कहीं पे तुमको ये वो amount नहीं मिलेगा 5,000 करोड़ का. ये सब add up करके मिला है. Okay. Now, अगर ये सब एक जगह पे लिख देता तो शुभेंदु अधिकारी बीजेपी का फ्लैग के बदले में इसका प्रिंट आउट लेके फ्लैग बना के घूमता हर जगह में. और शायद शुभेंदु अधिकारी को भी ये सब पता नहीं है और समझना भी नहीं चाहता है, क्योंकि उसको भी लगता है कि इनका तो वोट लगेगा जीतने में. तो ओके. नाउ माइनॉरिटी अफेयर्स एंड मद्रासा एजुकेशन डिपार्टमेंट, काम क्या है? लोन्स एंड एडवांसेस. हेड ऑफ अकाउंट कौन है? लोन्स फॉर वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड माइनॉरिटीज. हर जगह पे ये सब हो रहा है, ठीक है. व्हेन वी गेट इनटू द थिंग, व्हेन वी गेट इनटू द पेपर, वी विल सी दैट देयर आर नो mentions of scheduled tribes, etc. Okay, this is I'm seeing from the West Bengal government website, finance.wb.gov.in. anyone can check it out on their own. Okay, हो गया. Okay, and this is just for confirmation. This is the central government's minority budget. You see this amount here, 3,032, and this is the final budget, 3,097 crores. This is the budget of central government for minority affairs, and our state government's budget for minority affairs is 2,000 crore rupees more than that. Okay. Now let me check out the comments a bit. Let's see if anything important is going on. Anurag Chatterjee is saying, because Bengalis know the meaning of socialization, which is told by government, they blindly trust Netaji. Yes, yes. Rohan is saying, Dada Shubhendu Adhikari is a wolf in sheep's disguise. Yes, I only trust Dilip Ghosh. Okay. Now, we won't get into things which are, we know that it's going to mainly go to, all this money is going to mainly go to Ashrafs and the Middle Eastern colonizers, etc. But on the face of it, at least legally speaking, someone might argue that a lot of these budgets are for Jains and Buddhists, Sikhs of Calcutta, Christians as well, because we have a significant Christian population as well, and it's ever rising in West Bengal. But I will specifically point out to you which are definitely going to our Middle Eastern colonizer brothers.
Okay, because we will see the word madrasa repeatedly in all these descriptions. So first we are going to see what is this budget of 1 crore 17 lakh 56,000 for. Okay, कैटेगरी है सेक्रेटेरिएट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर के लिए ये सब है सेक्रेटेरिएट, which total comes down to 1,17,5600. What are the things coming under this? Minorities Development and Welfare Department State. Now, if someone is sitting down in their house with a little bit of vodka, take a shot every time you hear the word development and take a shot every time you hear the word welfare. Okay, you will be drunk in half an hour. तो माइनॉरिटीज का डेवलपमेंट एंड वेलफेयर करना है बिकॉज कॉमी इकोनॉमिस्ट सेड सो एंड वोक पीपल सेड सो. सैलरीज के अंदर ये है 64,76,000 रुपीज. अब देखो इंग्लिश ग्रामर भूल जाना है. सैलरीज अलग है, वेजेस अलग है. आई डोंट नो इफ आई एम अनएडुकेटेड बट सैलरी एंड वेजेस सीम सेम टू मी. तो सैलरी है 64 लाख रुपीज, वेजेस है 55,000 रुपीज. देन वी हैव माइनर वर्क्स एंड मेंटेनेंस, पेमेंट ऑफ प्रोफेशनल स्पेशल सर्विसेज एटसेट्रा. All this total comes down to 1 crore 17 lakh 56,000 rupees. The next category we have minority affairs, education, sports, art and culture. 5 करोड़ का बजट है यहाँ पे. यहाँ पे क्या क्या है? State development schemes. We'll get into the specifics here. अच्छा, तो पहले देखो ये provision for physical education facilities in school. दिस इज प्रॉब्ली 5 crores. पूरा का पूरा ही 5 crore है. यहाँ पे ज्यादा ब्रेकअप नहीं दिया है. दीज 2 columns आर द प्रीवियस ईयर्स. ओके, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पोर्ट्स स्कूल्स. ओके, सीम्स नाइस. नेक्स्ट वी हैव this is the most crazy work. This will take the most amount of time. Okay, now buckle up, tie your seat belts. Welfare of scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes and minorities. स्कीम्स क्या क्या है? बजट है 2,332,000 crore 24,46,000 रुपीज. पहला कैटेगरी है वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज. खुद ही बोल दिया वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज है और उसमें ये दोनों डिवीजन है, एजुकेशन एंड अदर एक्सपेंडिचर. अब स्पेसिफिक्स में जाते हैं. स्पेसिफिक्स में वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज के अंदर पहला टॉपिक है फ्री बुक्स एटसेट्रा फॉर चिल्ड्रन ऑफ प्राइमरी स्कूल्स. MD का full form, I think that means that it's under the minority department. I don't know, I'm not sure. But free books etc. for children of primary schools, if someone's a socialist, they might think that yeah, it's fair enough because they're not mentioning that it's specifically for madrasa students. Okay, so this budget is 1,10,000 rupees. Okay, incentive to the development of elementary education. Incentive किसी को कोई कैसे देता है मुझे पता नहीं है, मगर उसका बजट है 6,000 रुपये. अगेन 6,000 रुपये में कुछ भी नहीं होगा. खाम खा एक 6,000 रुपये कहीं पे घुसा दिया है, which is a waste. Payment of service charges to banks 5 lakh. I'll get to the interesting ones. National scholarship at the secondary stage for talented children from rural areas. Okay, sounds fair. But ये minority affairs के अंदर है. ठीक है, ये हर आदमी के लिए नहीं है. टैलेंट होने से ही नहीं चलेगा. तुमको स्पेसिफिक गॉड को वर्शिप करना होगा तब ये पैसा मिलेगा तुम्हें. ठीक है, क्योंकि हम सेक्युलर है. 1,02,000 रुपीज. अब देखो गवर्नमेंट मदरसा का एक एक्सपेंडिचर क्या है. ओके, पहला है सैलरीज. सैलरीज का टोटल एक्सपेंडिचर है 2 crore 52,58,000 रुपीज. वेजेस के अंदर ये सब है. वेजेस है 29 लाख रुपए. मेडिकल रिइंबर्समेंट एक्सेट्रा. ऑफिस एक्सपेंसेस के अंदर टेलीफोन वगैरह ये सब मिला के 7,41,000 rupees. Now you might think this is so small for wages of madrasas. Even if it's wrong, it's too small. Then we will see how it's not wrong and how there are different departments in the government funding this same thing over and over again, which is why the amount comes to 5,000 crore rupees. Okay, payment of professional special services. Okay, assistance to non-government madrasas. This I found pretty hilarious and pretty crazy. असिस्टेंस टू नॉन गवर्नमेंट मदरासाज है 700 crore 57,19,000 रुपीज. ठीक है, नॉन गवर्नमेंट मदरासा में गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा है देन गवर्नमेंट मदरासाज देमसेल्व्स. 700 crore रुपीज.
Maintenance and repairs of non-government secondary school. Okay, now West Bengal Board of Madrasah Education, इनके अंदर माइनॉरिटी वर्क, थोड़ा बहुत मेंटेनेंस, ग्रांट्स इन एड, सैलरीज, ये सब मिला के 5 crore 42 lakh rupees, 5 crore 42 lakh rupees, yeah. Okay, now West Bengal Madrasa Service Commission for recruitment of teachers in non-government madrasas, बजट है 1 crore 34 lakh rupees. कलकत्ता मद्रासा का बंद हो गया है, उसके बदले में आलिया यूनिवर्सिटी खोला गया है, विच इज़ Mamata Banerjee's dream of making an equivalent of Aligarh Muslim University or Jamia Millia. It's called Alia University. Alia University का ये जो 015 इसके अंदर का टोटल बजट है 50 crore 33 lakh rupees. Okay. Then 016 Directorate of Madrasa Education, इनका सैलरीज का बजट है 1 crore 10 lakh 50,000 rupees. Then wages वगैरह मिला के 13 lakh 93,000 rupees. रेंट्स, टैक्सेस, ये सब चीज़ का रैंडम मिसलेनियस, बट सब माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर, ठीक है. और 7,000 rupees, 1 lakh या रेंट्स वेंट्स मिला के 1 crore 47 lakh 55,000 rupees. देन ये सब बंद हो गया है. ग्रांट्स इन एड जनरल, अदर ग्रांट्स, ये भी 3,90,000. State development schemes, total administrative expenditure 763 crore 35,026 lakh rupees. See the amounts. Okay, let's go to this one. Minority affairs, social services, social welfare and nutrition. Head of account कौन है? Social security and welfare. बजट है 767 crores 75 lakh 5,000 rupees. इसके अंदर क्या क्या है? Wait, I think I missed some interesting parts there. Okay, let me check it out once again. हाँ, ये सब देखो. Assistance for computer education in non-government secondary schools, but minority affairs के अंदर है, तो समझो कि किसके पास जा रहा है. 35 crore rupees. अच्छा, ये 20 crore किसके लिए है? इंसेंटिव फॉर गर्ल स्टूडेंट्स ऑफ मद्रासाज, 20 crore rupees का इंसेंटिव, ठीक है. स्कूल ड्रेस फॉर गर्ल स्टूडेंट्स इन प्राइमरी स्कूल्स, स्पेसिफाई नहीं किया है कि मद्रासा की नहीं, इसका 1 crore है. अच्छा, 80 crore. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कूल बैग्स, ड्रेसेस, शूज टू स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 1 to 8, माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर है, ठीक है, नॉट फॉर एवरीवन. प्रिंटिंग ऑफ नेशनलाइज्ड टेक्स्ट बुक फॉर चिल्ड्रन एट प्राइमरी स्टेज, 50 crore rupees. अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है. टैलेंट सपोर्ट प्रोग्राम फॉर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स. मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को का टैलेंट सपोर्ट करना है, उसके लिए 1,200 and 1,000 crore rupees. ओके, ये देखो, ये मैं मिस कर गया. स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग मेंटेनेंस अलाउंसेस टू द स्टूडेंट्स स्टेइंग इन मद्रासा स्कूल्स अटैच्ड हॉस्टल्स. हॉस्टल्स में जो रह रहे हैं उसके लिए मेंटेनेंस अलाउंसेस. ओके, कितना है? 20 crore rupees. ओके, दिस वी डिड, या दिस वी डिड. वेट, ओके, और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं यहाँ पे. करिकुलम सपोर्ट एंड रिसर्च ट्रेनिंग, 10 crore रुपए. प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, 25%, 18 crore 50 lakh rupees. Monitoring unit, okay. Improvements of buildings of junior schools, 12 crore rupees. Okay, Jain को फाइनली पैसा मिल रहा है. स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू जैन कम्युनिटी, 10 lakh rupees. जैन लोग तो 10 लाख रुपए से अपना मुंह धोते होंगे. स्ट्रेंथनिंग ऑफ साइंस लेबोरेटरीज इन सेकेंडरी स्कूल्स, ठीक है, 100 crore rupees, बट इट्स इनसाइड द माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट. ओके, ओके. प्रोवाइडिंग क्वालिटी एंड साइंटिफिक एजुकेशन इन अनएडेड मद्रासाज, ये सब मिला के 100 crore rupees. ओके, अब प्रधानमंत्री का स्कीम भी है यहाँ पे, और 10 crore रुपए है. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, स्टेट डेवलपमेंट स्कीम विद सेंट्रल असिस्टेंस. प्री मेट्रिक स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटीज, अनदर 20 crore rupees. सेंट्रल सेक्टर स्कीम, या ये सब मिला के दिस अमाउंट कम्स टू 2,332 crore rupees.
Welfare of minorities, other expenditure, another 19,20,000 rupees. Welfare, yeah, the deductions hai. Okay, now we'll get into the next topic. Okay, let me check the comment section once. Dada, please do an in-depth research on Didi's background and her relationship with her nephew. Yeah, why do you want me to get killed? Abhishek Mukherjee is truly Mamata Banerjee's nephew. There is no secret about that. Also, please share the doc. Oh, wanna do a data analytics project on it. Okay, this is all in the government website. Okay, I'll tell you the website name. It's called finance.w.gov.in. ओके वहाँ पे 2023 का वेस्ट बंगाल बजट ढूंढो तो मिल जाएगा. गूगल में सर्च करने से भी यही पेज मिलेगा. वहाँ पे जाके वी आर डिस्कसिंग द माइनॉरिटी अफेयर्स टैब. इट्स नंबर 38. आई विल शो यू दैट. यहाँ पे ये है वो डॉक्यूमेंट. यहाँ पे ये जो नंबर 38 करके दिया है, माइनॉरिटी अफेयर्स एंड मद्रासा एडुकेशन, इसके अंदर ये सब है. ठीक है, नाउ लेट्स गेट ऑन विद दिस. हाँ, 767 करोड़ 5,05,05,000 रुपीज. ये किसके लिए है? डायरेक्टिव, ओके, डायरेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वेलफेयर ऑफ एजेड, इन्फर्म एंड डेस्टिट्यूट, माइनॉरिटीज का, माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर है. अदर प्रोग्राम्स, अभी तक कहीं पे SC ST ट्राइब वाइब दिखा? कहीं पे नाम नहीं दिखा ना. ठीक है, मगर हर कोई क्या ऊपर में लिखा था कि SC ST शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब एंड माइनॉरिटीज, मगर यहाँ पे कोई ऐसा कुछ लिखा नहीं है. ठीक है, ओके, now let's get into the detailed breakdown. Social welfare, फिर से डायरेक्टोरेट ऑफ माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड वेलफेयर, 69,99,000 रुपीज. सैलरीज अलग, वेजेस अलग. वेजेस कितना है? वेजेस मेडिकल रिम्बर्समेंट मिला के 9,68,000 रुपीज. डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी सेल्स, उनका सैलरी मिला के 1,11,56,000 रुपए. उनका वेजेस वगैरह मिला के 46,76,000 रुपीज. सोशल वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ एजेड, इनफॉर्म, डेस्टिट्यूट, स्कीम फॉर हाउसिंग फॉर डेस्टिट्यूट माइनॉरिटी वुमेन. अच्छा, स्कीम फॉर हाउसिंग फॉर डेस्टिट्यूट माइनॉरिटी वुमेन अंडर डेस्टिट्यूट माइनॉरिटी वुमेन रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम. ग्रांट्स इन एड जनरल, अदर ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, ये सब मिला के 320 करोड़ रुपीज. अदर प्रोग्राम्स, सेटिंग अप ऑफ वक्फ ट्राइब्यूनल. ठीक है, वक्फ ट्राइब्यूनल का सैलरी ये सब मिला के 90 लाख सो फार, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट में. और भी आएंगे वक्फ का फाइनेंसिंग के बारे में. सो फार 90 लाख रुपीज 86,000. मेडिकल रिइंबर्समेंट्स, वेजेस मिला के और 16,75,000. पेमेंट ऑफ प्रोफेशनल एंड स्पेशल सर्विसेज. Then West Bengal Minorities Development and Finance Corporation. Remember, every time I say development, you take a shot of vodka. Minor works, maintenance general, 6,85,46,000 rupees. Okay. अब ये देखो, ये इंटरेस्टिंग है. कंस्ट्रक्शन ऑफ बाउंड्री वॉल सराउंडिंग मुस्लिम एंड क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड्स. ठीक है, अच्छी बात है. उसके अंदर क्या है? ग्रांट्स फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ WBMDFC. ओके, अब WBMDFC क्या है दिखाते हैं तुमको. WBMDFC, वेस्ट बंगाल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस. ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनका डेवलपमेंट करने के लिए भी बजट है. अब इनका डेवलपमेंट लिखा भी नहीं है, कहा गया है कि इनका स्ट्रेंथनिंग करने के लिए. सी हाउ वेग ऑल दिस इज. दिस इज द वेगेस्ट ऑफ देम ऑल सो फार. How do you judge or how do you work towards arbitrarily strengthening something? This is an English literature term. This is not a hard factual economics term. This is not a scientific term. Strengthening, okay? It's a subjective term. So strengthening के लिए 2 करोड़ रुपए है. As a free market economics guy, I would say that taking away all welfare economics is how you strengthen people and organizations. Okay. But construction of boundary wall surrounding Muslim and Christian graveyards, ठीक है, 2 करोड़ रुपए. अब थोड़ा और इंटरेस्टिंग चीज़ें आएगा. रिसर्च, स्टडीज, मॉनिटरिंग, इवेल्युएशन ऑफ स्कीम्स, 1 करोड़ 20 लाख रुपीज. ग्रांट्स इन एड टू NGOs implementing projects for development and welfare of minorities. Development, welfare NGOs को 12 crore rupees here at least so far. Grants in aid to Waqf board or / Waqf estates for development of Waqf properties. Okay, development of the development, for the development, by the development of developing development.
ग्रांट्स इन एड टू वॉकफ बोर्ड / वॉकफ एस्टेट्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ वॉकफ प्रॉपर्टीज, ठीक है, कितना है 13 crore रुपीज सो फार, एटलीस्ट फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट. एक्सटेंशन फॉर हॉस्टल्स एंड स्टफ, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ माइनॉरिटीज, अभी तक एनफ नहीं था तो अब स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ माइनॉरिटीज के लिए और 10 करोड़, ले जाओ 10 करोड़ रुपए. स्कीम फॉर डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज, इसके अंदर क्या क्या आता है, ग्रांट्स इन एड जनरल अदर ग्रांट्स 150 crore रुपीज. स्कीम फॉर हाउसिंग, अच्छा ये सब बंद हो गया है, ये पिछले साल तक था क्योंकि इसका फंडिंग अलग जगह से आ भी जाएगा वैसे भी. अच्छा, स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ माइनॉरिटी वुमेन अंडर डेस्टिट्यूट माइनॉरिटी वुमेन रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम 25 crore रुपीज. अच्छा, इंटीग्रेटेड माइनॉर, अच्छा ये किसके अंदर है, प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाईसाइकिल्स टू माइनॉरिटीज, ठीक है, प्रोक्योरमेंट खरीदना एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाईसाइकिल्स टू माइनॉरिटीज 220 crore रुपीज, ठीक है. टैलेंट सपोर्ट प्रोग्राम फॉर मेरिटोरियस माइनॉरिटी स्टूडेंट्स, ये इसका सिर्फ अकेले का बजट 433 crore है या 220 मिला के है, ये मैं समझ नहीं पाया, इतना वेग तरह से है. बट माई हंच इज बिकॉज बेस्ड ऑन द रीडिंग आई डिड ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स, इट्स जस्ट फॉर दिस सेपरेटली. टैलेंट सपोर्ट प्रोग्राम फॉर मेरिटोरियस माइनॉरिटी स्टूडेंट्स, स्कॉलरशिप्स एंड स्टाइपेंड्स, इसका बजट है 433 crore रुपीज. अच्छा, उसके अलावा क्या है, मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट स्कीम फॉर माइनॉरिटीज सेंट्रल शेयर, अच्छा ये सब मिला के तो चार्ज अभी तक हुआ नहीं है, 441 crore रुपीज. दीज आर द डिडक्शंस. ओके, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इसका बजट है 149 crore 12,05,000 रुपीज. माइनॉरिटी अफेयर्स एंड मद्रासा एजुकेशन, सोशल सर्विसेज एंड अदर हेड ऑफ अकाउंट कौन है, अदर सोशल सर्विसेज, ये मैनेज करेगा अकाउंट. लेट्स चेक आउट सम कमेंट्स वंस अगेन. ओके, अबे कितने बाइसाइकल्स खरीदोगे, এটা কি মন্দিরে খিচুড়ি পরিবেশন. ওকে, ইয়া, সামওয়ান রাইট নাও গুগল ইফ দেয়ার ইজ এনি ডেটা অ্যাবাউট হাউ মাচ ডাজ ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট আর্ন ফ্রম ওয়েস্ট বেঙ্গলস টেম্পলস, ওকে, because we need to find out how much directly Hindu devotees are funding for all of these. Okay, इसके अंदर क्या क्या है, अदर एक्सपेंडिचर के अंदर ग्रांट्स टू स्टेट हज कमिटी, ओके, 2,64,55,000 रुपीज. ओके, दिस 005. 00017 के अंदर क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू द बोर्ड ऑफ वॉक्स वेस्ट बंगाल 146,47,50,000 rupees. Okay, then scheme for construction of Muslim students hostels in the districts formulated by the Minority Affairs and Madrasah Education Department. उनके ही हाथ में छोड़ दिया है कि तुम देखो कौन सा तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे तुम मुस्लिम हॉस्टल्स कंस्ट्रक्ट करो. अच्छा, तो मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट कौन सा जज होगा, जहाँ पे ऑलरेडी वो मेजोरिटी में है, ठीक है, वहाँ पे वो माइनॉरिटीज़ भी नहीं है, लाइक मालदा एंड ऑल. मालदा में 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 53% है हमारे मिडिल ईस्टर्न ब्रदर्स. अच्छा, वहाँ का बजट है 149 crore 12 lakh रुपीज़. अदर एक्सपेंडिचर्स डिडक्शंस. ओके, नेक्स्ट, सोशल सर्विसेज अदर्स, इनका बजट है 6 crore 53,34,000 रुपीज़. सेक्रेटेरिएट, अच्छा, माइनॉरिटी अफेयर्स एंड मद्रासा एजुकेशन डिपार्टमेंट, सैलरीज के अंदर जो है वो सब मिला के 5 crore 81,000. वेजेस 42,30,000. अदर चार्जेस ये सब मिला के 6 crore 53,34,000. अच्छा, ये सब डिडक्शंस, चार्जेस एक्सेट्रा. ओके, नाउ माइनॉरिटी अफेयर्स एंड मद्रासा एजुकेशन डिपार्टमेंट, अभी तक किसी को शेड्यूल ट्राइब नहीं दिखा, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब कुछ नहीं है. रूरल डेवलपमेंट, माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर रूरल डेवलपमेंट है. हेड ऑफ अकाउंट कौन है, अदर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, इनका बजट है 105 crore रुपीज़. ये ब्रेकअप है, ब्रेकअप बहुत वेग है, ये समझ में तो इतना टाइम गया मुझे. अच्छा, एक टॉपिक है यहाँ पे स्पेसिफिक, असिस्टेंस टू पंचायत बॉडीज फॉर रनिंग मद्रासा शिक्षा केंद्रस. ओके, अभी भी रुको, अभी भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बाकी है. असिस्टेंस टू पंचायत बॉडीज फॉर रनिंग मद्रासा शिक्षा केंद्रस, इनका बजट है 105 crore रुपीज़ टोटल. और यहाँ पे और कुछ नहीं दिया.
बहुत दुख की बात है। अच्छा, यहाँ पे माइनॉरिटी अफेयर्स एंड मद्रासा एजुकेशन डिपार्टमेंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ सोशल सर्विसेज, कैपिटल अकाउंट ऑफ वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, ये नाम है कैटेगरी का। हेड ऑफ अकाउंट कौन है? कैपिटल आउटले ऑन वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड माइनॉरिटीज। इनका बजट है 1527,17 लाख करोड़ रुपीज। इनके अंदर क्या क्या स्पेसिफिक्स है? हाँ, ये एक स्पेसिफिक्स है, डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज। ओके, टोटल 650 crore rupees. Construction works for development of minorities, 230 crore rupees. Okay, welfare of minorities. Improvement of buildings of madrasa. हिमंत बिश्व शर्मा को ये स्क्रीनशॉट भेजो कोई। Improvement of buildings of madrasa, 12 crore rupees. Strengthening of science laboratories in madrasa, 12 crore rupees. Support for equipment and furniture for madrasa, 16 crore rupees. Construction of additional classrooms of madrasa, 12 crore rupees. Construction of boundary walls surrounding graveyards, gug and mazar etc. for minority. ओ ये बंद हो गया, ये पिछले साल तक था, इस साल नहीं है क्योंकि ये इसका फंडिंग दूसरे डिपार्टमेंट में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ओके, इंटीग्रेटेड माइनॉरिटी डेवलपमेंट स्कीम, 160 crore rupees. डेवलपमेंट ऑफ वॉक ऑफ प्रॉपर्टीज, वॉक ऑफ प्रॉपर्टीज का डेवलपमेंट करना है 20 crore rupees में। कंस्ट्रक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग ऑफ द वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ मद्रासा एजुकेशन, मद्रासा चलाने का जो डिपार्टमेंट है उनके एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का डेवलपमेंट करना है, इसलिए 2 crore rupees. ओके, प्रोविजन फॉर कॉमन रूम्स फॉर गर्ल्स, टॉयलेट्स एंड ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी sounds like a secular policy, but remember it's inside the minority affairs budget. Development of Alia University, which we just discussed, 132 crore rupees. Establishment of sports schools, ठीक है. Improvement of libraries, reading rooms in secondary schools, inside minority affairs. अच्छा प्रधानमंत्री विकास इत्यादि, हाँ ये सब देख लिया है, ठीक है. ये पेज, ये नेक्स्ट है, कास्ट करते हैं. ओके, कैपिटल अकाउंट ऑफ सोशल सर्विसेज, कैपिटल अकाउंट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड न्यूट्रिशन, 60 crore रुपीज इनका बजट है. इनमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है, क्या क्या नाम दिया है, देखो देखते रहो अभी. इन्वेस्टमेंट इन स्कीम ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ओके, इनका बजट है 5 crore रुपीज. इन्वेस्टमेंट इन स्कीम ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ NMDFC और 5 crore रुपीज. अच्छा, NMDFC क्या है एक बार देख लो. नेशनल मिनरल, नहीं ये कुछ और होगा. NMDFC वेस्ट बंगाल, देखते हैं इनका फुल फॉर्म क्या है. नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, समझ गए. इनका बजट है और 5 crore रुपीज. अच्छा, इन्वेस्टमेंट इन स्कीम ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ NMDFC या 5 crore रुपीज. अच्छा, सेटिंग अप ऑफ न्यू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर माइनॉरिटीज, 20 crore रुपीज. स्कीम फॉर डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज बंद हो गया, पिछले साल तक था क्योंकि इनका फंडिंग दूसरे डिपार्टमेंट से ऑलरेडी हो गया. अच्छा, प्रोविजन फॉर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द माइनॉरिटीज एरिया. अच्छा, ये माइनॉरिटीज एरिया क्या होता है सेक्युलर कंट्री में? प्रोविजन फॉर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सिर्फ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नाम दिया है मगर सिर्फ रूरल तो है नहीं. उसके अगले सेंटेंस में, उसके अगले फ्रेज में स्पेसिफाई कर दिया माइनॉरिटीज एरिया. माइनॉरिटीज एरिया का रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का बजट है 30 crore रुपीज. ओके, मल्टी सेक्टोरल ये सब बंद हो गया. ये है अभी भी मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट स्कीम फॉर माइनॉरिटीज, सेंट्रल शेयर मिला के 50 crore रुपीज. मोदी भी बहुत दे रहा है, ठीक है, खत्म. फिर यहाँ पे और भी है, अभी भी असली सबसे मजेदार चीज़ें बाकी है, ठीक है. एक है उर्दू को लेकर, उसके लिए रुको थोड़ा. हाँ, 68 crore रुपीज इनके लिए. माइनॉरिटी अफेयर्स मद्रासा एजुकेशन डिपार्टमेंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ सोशल सर्विसेज, कैपिटल अकाउंट ऑफ अदर सोशल सर्विसेज. डिपार्टमेंट क्या है, हेड ऑफ अकाउंट कौन है, कैपिटल आउटले ऑन अदर सोशल सर्विसेज. इनका स्पेसिफिक्स है. अच्छा, स्कीम फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल्स फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स इन द डिस्ट्रिक्ट्स, इन द डिस्ट्रिक्ट्स मतलब द डिस्ट्रिक्ट्स अदर देन कोलकाता. इनका बजट है 40 crore रुपीज यहाँ पे, ठीक है, टोटल. कंस्ट्रक्शन ऑफ सेकेंड हज हाउस,
ठीक है। सेकंड हज हाउस बनाने में 21 करोड़ रुपीज लगेगा। पिछले साल 5 करोड़ लगा, इस साल 21 करोड़ रुपये लगेगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ माइनॉरिटी भवन, इसका बजट है और 3 करोड़ रुपीज। अच्छा, फिर से कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग ऑफ वेस्ट बंगाल माइनॉरिटी डेवलपमेंट एंड फाइनेंस, आई थिंक, और या फिर हम फुल फॉर्म बाद में देख लेंगे, पढ़ लेते हैं पहले। कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग ऑफ समथिंग रिलेटेड टू माइनॉरिटी डेवलपमेंट वेस्ट बंगाल, उनका बजट है 4 करोड़ रुपीज। अच्छा, अब देखते हैं इनका फुल फॉर्म क्या था, मैं भूल गया। WBMDFC, वेस्ट बंगाल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस, हाँ ठीक है। तो इनका इनका ऑफिस बिल्डिंग बनाने के लिए 4 करोड़ रुपए लगेंगे, माइनॉरिटी भवन अलग से बनाने के लिए 3 करोड़ रुपए लगेंगे, हज हाउस, सेकंड हज हाउस बनाने के लिए 21 करोड़ रुपीज लगेंगे, और हॉस्टल्स बनाने के लिए माइनॉरिटीज के लिए 40 करोड़ रुपीज, सिर्फ इस डिपार्टमेंट से। अच्छा, अब यहाँ पे माइनॉरिटी अफेयर्स एंड मद्रासा एजुकेशन डिपार्टमेंट इन द सेक्टर ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, ओके, ताकि लोग एंटरप्रेन्योर बन सके। एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट को एनकरेज करने के लिए लोन्स फॉर वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड माइनॉरिटीज, इनका बजट है 145 करोड़ रुपीज। इनके स्पेसिफिकेशंस में जाते हैं। ये सब बंद हो गया, हाँ ये अभी भी चल रहा है। लोन टू मेरिटोरियस एंड नीडी स्टूडेंट्स, अच्छा मेरिटोरियस एंड नीडी होना है, एंड माइनॉरिटी भी होना है, बहुत सारा क्राइटेरिया है, डर का माहौल है। नीडी स्टूडेंट्स ऑन माइनॉरिटी कम्युनिटी स्टडिंग प्रोफेशनल टेक्निकल वोकेशनल कोर्सेज इन इंडिया एंड अब्रॉड, उनके लिए 50 करोड़ रुपीज। सॉफ्ट लोन्स टू इंडिविजुअल माइनॉरिटी यूथ्स फॉर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस, 60 करोड़ रुपीज। Soft loans to self-help group comprising 10 to 20 members, at least 60% members belonging to minority communities, for generating any income generating activities. इतना कोई इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट अगर देख रहा है भी है भाई, ये हमको समझाओ, कोई हाउ इज दिस इवन पॉसिबल टू बी गेज्ड। ये कोई गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट आके जज भी कैसे करेगा कि ये हो रहा है, ये क्राइटेरिया फुलफिल हुआ है, ये जज करना भी इम्पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू मी। इसका बजट है 35 करोड़ रुपीज, और टोटल तो है 145 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट। और 2 टैब बाकी है। ओह, खत्म हो गया क्या? नाइस। ओह या, वी आर डन विद दिस गाइज। Oh, then I missed something, I think. I missed one section where it said development of Urdu language. I unfortunately missed that. तो डेवलपमेंट ऑफ उर्दू लैंग्वेज का थोड़ा ढूंढ लेता हूँ, एक बार कमेंट सेक्शन भी देख लेते हैं। अपना माथा पीटने का मन कर रहा है। हाँ, रोहन इज सेइंग शी इज रेडी टू डिस्ट्रॉय बेंगल्स कल्चर टू स्टे इन पावर। Cannot find any data of the list of temples under West Bengal government control, leave alone revenue. Can someone help? No idea. Malda, Murshidabad and North Dinajpur are Muslim majority districts in Bengal. Yeah, according to 2011 census. Dada, the way you are exposing. Yeah, that is the problem. Okay, let me just check out the scheme called Development of Urdu. वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। यहीं पे कहीं पे होगा। डेवलपमेंट ऑफ उर्दू का कौन से कैटेगरी में होगा? एक बार फिर से स्क्रॉल अप करते करते देख लेते हैं। ये लास्ट वाला क्या है? ओ, ये वाला आई थिंक मिस या दिस इज अनदर डिपार्टमेंट रिमेनिंग। ओ नहीं, ये तो पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट का है। हाँ, इसमें माइनॉरिटीज़ का कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमारे लिए है, ये सेक्युलर्स के लिए है। डेवलपमेंट ऑफ उर्दू कहाँ था? यहीं पे स्क्रॉल अप करते करते मिल जाएगा। माइनॉरिटी भवन, रुको थोड़ा। Development Urdu is the most fascinating thing because these things are supported by Bangla Pokho, who are all about Bengali pride. Bengali pride people are financing Urdu pride people, okay, with their own money. If you guys notice this thing, also let me know. Development of Urdu, यहाँ पे सर्च करने से तो नहीं मिलेगा। थोड़ा स्क्रॉल अप करने दो। I'll have to make a video separately anyway. वहाँ पे अगर मिला तो डाल दूंगा। डेवलपमेंट ऑफ उर्दू लैंग्वेज ऐसे करके था।
वॉक ऑफ, चलो छोड़ो, लाइव स्ट्रीम में टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है. लेट मी चेक आउट सम कमेंट्स देन आई विल गो ऑफलाइन. What do you think the end goal is? The end goal is staying in power. She does not have any specific ideology. She, in her heart, she is a communist. She thinks just the government just needs to deliver free stuff to everyone. That's the end all be all of her goals. She does not know any political science, obviously. So all he knows is that BJP does not do these things and BJP plays divisive politics, etc. So BJP को prevent करना है, खुद को power में रखना है, ताकि हम अच्छे ये फ्री चीज़ें दे सके. She doesn't know that we are not okay. If it is saying control plus F then write Urdu. Okay, let me check. Wait. करते हैं. Control F. Thanks. ये सब मुझे आता नहीं है. Promotion of Urdu. ये देखो. Thanks Efin. तो प्रमोशन ऑफ उर्दू का बजट है टोटल 18 crore 50 lakh rupees. ओके गाइज, प्रमोशन ऑफ उर्दू का बजट है 18 crore 50 lakh rupees. ओके, दैट्स द एंड ऑफ आवर कास्टिंग हियर. सो विल चेक आउट द लाइव कमेंट्स नाउ. Garg has been puking rubbish against Hindi language. Yes, that's his entire career. Against Hindi language and speakers on Twitter while he won't open his trap on Urdu development. Yeah. उसको दिखाओ. हाँ, तो एंड गोल यही है कि जस्ट किसी भी तरह पावर में रहना है और फ्री स्टफ देना है. देखो, अभी योगी आदित्यनाथ, बीजेपी, नरेंद्र मोदी, सबका ही पॉलिसी है कि फ्री स्टफ डिस्ट्रीब्यूट करना है. मगर व्हाट डिड योगी आदित्यनाथ स्पेसिफाई? दैट वेल्थ है नहीं, डिस्ट्रीब्यूट क्या करूँ. ये कॉमन सेंस है योगी आदित्यनाथ के दिमाग में, क्योंकि वो एटलीस्ट मैथमेटिक्स पास है, बीएससी. ममता बनर्जी को ये समझ में नहीं आ रहा है. उसका इकोनॉमिक एडवाइज़र पीएचडी है कैम्ब्रिज वगैरह से. वो बोल रहा है, ये सुन नहीं रही है शायद. पूरे स्टेट में कुछ वेल्थ है नहीं, सिर्फ फ्री स्टफ है. और शुरू में जो सब पॉलिसी हमने डिस्कस किया, तो कहाँ से होगा ये सब. और इतना बजट है सिर्फ उनके लिए, मिडिल ईस्टर्न सेटलर कम्युनिस्ट कॉलोनियलाइजर्स के लिए. Okay guys, thanks for joining in the live stream. Let's end this here. I'll hopefully, this will require huge amounts of editing, so I'm a bit apprehensive, but I'll get to it sometime soon. And other than that, I'll get to more live streams with other topics as well. Thanks for joining in the live stream. See you guys. Share this video around, and so that people know this stuff. Welfare should not be more than economy. Yes, absolutely. Thanks guys. Good night.